Welcome to We Learn. Today we will start from JDBC, that is the Java database connectivity in Java. JDBC, that is the Java database connectivity. In JDBC, this one is the API in Java. By the help of this API, we can connect the different type of database like as MySQL, Oracle, Sybase, and anything else. We will connect through this API. Means this API has the complete definition about the classes and interfaces in form of packages. Means the class and interface will support us to connect with different type of database. There will be a same scenario. By the help of that, we can connect the different type. First of all, we go through some special code.
ये कोड लिखा है अभी कनेक्टिविटी के लिए, अगर हम ये कोड लिखा हुआ है MySQL डेटाबेस के कनेक्टिविटी के लिए, जब भी कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो उसमें हमें 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग ड्राइवर को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करते हैं, देन क्वेरी लिखते हैं, देन ऑपरेशन करते हैं। 2 काम कॉमन होता है, ड्राइवर को रजिस्टर करना एंड द सेकंड वन इज द कनेक्शन क्रिएट करना। दिस वन विल बी कॉमन फॉर द ऑल द डेटाबेस। इसलिए हम लोग इन 2 चीज़ों को लेकर के द ड्राइवर मैनेजर एंड द कनेक्शन इंटरफेस, by the help of these we can connect the database. That's why this one is the first of all we have created a package by the name of connect. You can create any name of by the help of any name of the package. We need the connection interface, driver manager class and SQL exception the class. These 3 one is in java.sql package, and after that we have created the class connect, that is the public. Because of we have to need the input this package in another package, that's why we must have to take this class in public form. We have take 3 variables, URL, UID and password. URL, that is the uniform resource locator, that is the JDBC colon MySQL colon localhost, means we are going to do the Java database connectivity with the MySQL database on localhost system. If you are going to this code are going to use the online application, there at that place you have to use the IP address instead of the local host, and 3306 is the by default port number. At the time of installation the MySQL database you can change this port number, and this one is the name of the database. This one is the default database, but you can create also the different name by the different database by different name. Okay, and the UID by default UID is the root, and the second one is the password. Default password is the root. If you want to change the UID and password, then you can change at the time of installation. This one is the string type. URL is also the string type and password is also the string type. And these 3 variables are also the final, because of throughout the program we cannot change the assigned value in the in further. Static, where I have declared here static. Static means now these variables are going to use in the static method. I know that in a static method we can use only the static variables. Okay. This one is also the public and the static by the and get connection, that is the user defined methods. You can write here XYZ instead of the get connection. That's through the checked exception, that is the SQL exception. And now the thing is that now we are going to register the driver, means driver manager, that is the name of the class, register driver, that is the static method of the class driver manager. And now we have passed the driver, that is the name of the class. Here we are going to use the constructor, we are going to pass as argument this constructor, that is in package com.mysql.jdbc package, and this one is the constructor of the driver class, and new that will give the space in the memory for the driver class. Now the thing is that connection interface, we are going to take the variable connection con, and now driver manager dot get connection, that will assign into the connection interface type variable, that will pass under the URL, UID and password. Finally that will be complete, then con dot set auto commit, this one is the by default value, and this will return the variable of connection interface type.
पिछले प्रोग्राम में हम लोग कनेक्टिविटी कोड लिखे थे, उस कनेक्टिविटी कोड को इसमें यूज कर करके हम लोग एक डेटाबेस में के टेबल में डेटा को सेव कैसे करेंगे, एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखे हैं। एक पैकेज बना लिए XYZ और उसमें java.sql पैकेज को इंपोर्ट किए, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी हमें कनेक्शन इंटरफेस, ड्राइवर मैनेजर क्लास और SQL एक्सेप्शन क्लास की जरूरत पड़ेगी। connect पैकेज जो पहले बनाए थे उस पैकेज को हम लोगों ने यहाँ इंपोर्ट किया है। एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट मेन मेथड, दो वेरिएबल बनाए, एक sName और एक प्रोग्राम। इस दोनों वेरिएबल में हम लोगों ने वैल्यू असाइन किया। आगे कनेक्शन इंटरफेस जो हम लोगों ने गेट कनेक्शन मेथड, स्टैटिक मेथड बनाया था, उस मेथड को हम लोगों ने यहाँ यूज किया। देन एक क्वेरी लिखे, क्वेरी स्टूडेंट टेबल में sName और प्रोग्राम में क्वेश्चन मार्क मतलब मीन्स वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे। देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस टाइप का वेरिएबल बना के प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड में इस स्ट्रिंग वेरिएबल को पास करते हैं क्वेरी को कंपाइल करने के लिए। देन हम लोग वन बाय वन करके डेटाबेस के टेबल में सेव करेंगे। pstmt.setString, एक पर फर्स्ट वन इज द sName, this s1 is the this sName and this one program is the this one program. Then again pstmt.execute update, then print मैसेज किया, कैच एक्सेप्शन मिलने के वो बना दिया। मतलब हम लोगों ने अभी दो प्रोग्राम के थ्रू ये देखा कि एक MySQL डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट होंगे, उस पैकेज को यूज करके डेटाबेस के टेबल में वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, ये दो प्रोग्राम को हम लोगों ने अभी देखा है। जब हम डेटा इंसर्ट कर लिए पहला में प्रोग्राम में, अब हम लोग ना डेटाबेस के टेबल से डेटा को फैच करना चाहते हैं, तो कितने मेथड्स यूज कर सकते हैं रिजल्ट सेट इंटरफेस के थ्रू। एक फर्स्ट दैट विल गिव यू द डेटा ऑफ फर्स्ट रो सेम एज इट इज लास्ट, आफ्टर लास्ट इज आफ्टर लास्ट, बिफोर फर्स्ट इज बिफोर फर्स्ट। देन नेक्स्ट मेथड काउंट, प्रीवियस, रिलेटिव रिलेटिव प्लस 2 मीन्स हुआ कि हम लोग अगर पहले रो पे हैं तो फिर दूसरा दो रो को छोड़ करके प्रिंट करेगा। मतलब फर्स्ट रो हुआ, देन सेकंड नहीं, थर्ड, फिर फोर्थ नहीं, फिफ्थ। रिलेटिव माइनस मीन्स दैट विल कम्स इन प्रीवियस ऑर्डर। अगेन
this will give you the boolean value, means this row is the after last. is after last means कि ये जो रो है ये आफ्टर लास्ट के बाद जो रो जहां तक हमने लिया था उसके बाद की वैल्यू को अगर प्रिंट करना होगा, जैसे मान लो कि हमारा फर्स्ट रो है, हमारा टेबल में है 1 से लेकर के 10 तक और हम ट्रेवर्स कर रहे हैं 3 से लेकर के 7 तक। अब हम 8 रो में हैं तो हम चाहेंगे कि अगर 8th रो पर है और हम चाहेंगे कि हम कहाँ हैं और हमारा था पहले 7th, इज आफ्टर लास्ट, ये लास्ट था, इसके बाद आफ्टर लास्ट अगर यहाँ पर है तो ये अगर ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा मीन्स हुआ दैट विल, मतलब हम लोग आफ्टर लास्ट ये है। हम लोग ने डेटा बेस से डेटा फैच करके भी रिपोर्ट बना लेते हैं।
ये प्रोग्राम है मेरा कोर जावा के थ्रू डेटाबेस के टेबल से डेटा को फैच करने के लिए। सेम एज इट इज पैकेज बनाया, java.sql पैकेज को इंपोर्ट किया, connect पैकेज को इंपोर्ट किया जहां पर हमने कनेक्टिविटी लिख करके रखा हुआ था। एक स्टूडेंट रिपोर्ट नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर मेन मेथड के अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया, स्ट्रिंग sname एंड द प्रोग्राम। Then again we have to get the connection from the connect package. After that we have right here the query, that is now we are going to fetch the data from the student table, and this query will give us the complete record from the student table. Again हम लोगों ने इसको prepared statement में query को पास किया, query को compile करने के लिए, then उसी से result set में लिए। नेक्स्ट मेथड हम लोगों ने रिजल्ट सेट का यूज किया, 1 बाय 1 डेटा को फैच करके देन हमारा ये डेटा सारा टेबल से ला करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। यानी आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग JDBC के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं डेटा को, देन डेटाबेस से डेटा को फैच करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड JDBC? फर्स्ट ऑफ ऑल, before the JDBC and other programs uses the ODBC, but Java is one of the programming language that uses its own API, that is the Java Database Connect API. In this API there are many drivers, type 1 driver, type 2 driver, type 3 driver, type 4 driver. Why we need the driver? Actually driver, there are the two types of driver. One is the hardware based driver and second one is the application based driver. Driver, that is the set of programs which helps us to communicate between the two different type of environment. Means if we are going to install the sound card driver, means sound card driver will help us to connect, means sound card will interact with the system. Same thing here, application driver will help us to how the database will interact with our application. Thing is that just like this one is our application and this one is the database. Now we have to connect with the database with our application, but how? This one is written in the Java and this one is the another platform. There is no any communication between the our application and the database. In between, the driver will help us to communicate between the our application and the database. Means driver itself a program, itself a class interface you can say, that helps us to communicate between the Java program and the database. Means that will interact with the our application. ड्राइवर फर्स्ट ऑफ सबसे पहले टाइप 1 ड्राइवर था, टाइम टू टाइम ड्राइवर लिखा गया। पहला ड्राइवर था जो सबसे पहले फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 ड्राइवर। टाइप 1 ड्राइवर को JDBC ODBC ड्राइवर भी बोला जाता है, JDBC ODBC ड्राइवर, और इसको ब्रिज ड्राइवर भी बोला जाता है। ब्रिज ड्राइवर मीन्स JDBC में जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ इंटरेक्ट होता है और इसका कंट्रोल ODBC में कन्वर्ट होता है, देन अगेन डेटाबेस के पास जाता है, फिर इसका कंट्रोल इधर JDBC में कन्वर्ट होता है, देन हमारा एप्लीकेशन के पास जाता है। मीन्स दो डिफरेंट कंट्रोल के बीच जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, मीन्स JDBC और ODBC के बीच, इसलिए इसको ब्रिज ड्राइवर भी बोला जाता है। और ODBC that is written completely written in the C language, that's why this driver cannot help us to in web based application. इसके बाद आया टाइप 2 ड्राइवर, टाइप 2, then टाइप 3 ड्राइवर, that is the native API driver, native API, and the third one is the net protocol driver, network, and the type 4 जो आजकल फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं, टाइप 4 ड्राइवर, जिसको हम लोग बोलते हैं थीम ड्राइवर, और इसको प्योर ड्राइवर भी बोला जाता है।
ये ड्राइवर हमें स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन दोनों के लिए मदद करता है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड द वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन दोनों के लिए मदद करता है। ये रही आज की क्लास। हम लोग नेक्स्ट फिर देखते हैं आगे कल जीएसपी के साथ। We will again continue with GSP, then again we will continue with the driver. Actually JDBC, that is the basic API for connectivity with the GSP server. Same code we will write and same concept we will continue with the GSP as well as servlet also. So we will continue in the next class. Thank you very much.